हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 85 है फ्रॉम गाइटन एंड दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस। अक्सर एग्जामिनर्स इसमें से काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं क्वेश्चंस पूछने में एंड इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर एज वेल। सो लेट्स बिगिन। मल्टीपल वीडियोज़ में हम इसको कवर करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर एंड देन वी विल कैरी ऑन फ्रॉम देयर। सो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी की जब बात आती है, obviously sports is a scenario where you are putting your body to a stressful condition. So there are few stresses to which the body is exposed that approach the extreme stresses of heavy exercise. यानी heavy exercise is literally a very very heavy stress, और बहुत ही कम ऐसे stresses हैं जो आपकी body feel करती है equivalent to that of heavy exercise. In fact, in some of the extremes of exercises were continued for even moderately long period, they might be lethal. तो सुन रहे हैं? खैर, इससे डरना आपने नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन द स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेन देमसेल्फ, या जब एथलीट्स ट्रेन करते हैं तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करते हैं। ये नहीं कि वो आज उठे और कल से वो जो है 1000 मीटर वाली रेस का पार्ट बनना, ऐसा नहीं होता। सो दे ट्रेन देयर बॉडी फर्स्ट, ओके। देयरफॉर स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज मेनली अ डिस्कशन ऑफ अल्टीमेट लिमिट्स टू विच the several of the bodily mechanisms can be stressed. Now, you can imagine if a person is undertaking exercise or sports activity, उसके काफ़ी सारे systems actually push हो रहे हैं to the limits. So for example, the muscles, for example, the metabolism, the respiratory system, obviously the nutritional status. So सारी चीज़ें body की they are being put to stress, right? To give one example, in a person who has extremely high fever approaching the level of lethality, the body metabolism increases to about 100% above normal जब fever होता है। So for example, when you have a fever 104 degree for example, so ये 5-6 डिग्री का जो rise है टेम्परेचर का, ये आपके body metabolism को almost double कर देता है। So the metabolism goes to double, 100% increase of what you already have. इसको आप compare करें ज़रा exercise से। So marathon race में for example, the metabolism can go up to 2000%. सो जस्ट एक कंपैरिजन बताया कि फीवर में 100% है, लेकिन मैराथन रेस में 2000% इंक्रीज है। सो इमेजिन कि एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को किस लेवल पे ले जाके चेंज करता है। ठीक, अच्छा, अभी आई हैव टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर। बेसिकली हम मसल्स ही की बात कर रहे होंगे ज़्यादातर, बिकॉज मसल स्ट्रेंथ एंड मसल फिजियोलॉजी ऑल्सो अलॉन्ग विद द कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन द स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी चैप्टर। बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, it is important to consider a few important points about female and male athletes. अब ऐसा है कि most of the quantitative data that are given in this chapter and in most of the studies that you study, they are actually obtained for young male athletes, because young male athletes पर ज़्यादातर studies की गई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग मेल एथलीट्स ही दुनिया में मौजूद हैं, देयर आर लॉट ऑफ फीमेल एथलीट्स एज वेल, बट दिस इज़ द पॉपुलेशन ऑन विच द रिसर्च हैज़ बिन मोस्टली कंडक्टेड। तो जो भी मेजरमेंट्स हैं वो ज़्यादातर यंग मेल एथलीट। तो एक बात ये आपको एट द आउटसेट ऑफ द चैप्टर पता होनी चाहिए। Then measurements in older athletes and in females are much less complete, इसीलिए उसका डेटा कम है। However, for measurements that have been made in female athlete, similar basic physiological principles apply. So basic principles remain the same, with obviously differences between the body size, the body composition of fat, and the presence and absence of certain hormones. So for example, males may we know that there is testosterone, which is a heavily anabolic type of hormone, and therefore there is increased muscle mass in males compared to females. Obviously जब muscle mass increase होगा तो सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड जो कैपेसिटी है मेल्स में वो डिफरेंट होगी फीमेल से। ओके, इन जनरल मोस्ट क्वांटिटेटिव वैल्यूज फॉर वुमेन सच एज मसल स्ट्रेंथ, पल्मोनरी वेंटिलेशन, कार्डियक आउटपुट, ऑल ऑफ विच आर रिलेटेड मेनली टू मसल मास,
vary between 2/3 and 3/4 of the values recorded in the man. So that's kind of the range जहाँ ये difference होता है, 2/3 to 3/4. When measured in terms of strength per square centimeter of cross-sectional area of the muscle, the female muscle can achieve almost exactly. So अगर आप उसको unit distribution पे ले जाते हैं, it's almost the same. But चूंकि males में overall muscle ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो activity ज़्यादा होती है, okay? Therefore, most of the difference in the total muscle performance lies in the extra percentage of the male body muscle that they have, because they have testosterone. The performance capability of female versus male athlete is illustrated by relative running speeds of marathon race. So here is a comparison coming up. In a comparison, the top female performer had a running speed that was 11% less than the top male performer. So the speed was relatively less. For other events, however, women have at times held records faster than men. For example, two-way swim across English Channel. So more and more data coming up. इसलिए comparison को बहुत ज़्यादा अच्छा comparison नहीं है कि जी males में ये speed है, females में ये speed है. लेकिन इतना ज़रूर पता होना चाहिए from the aspects of physiology that testosterone is secreted in male testes, you know, and this is very, very powerful anabolic effect causing hormone, and therefore it greatly increased deposition of proteins everywhere in the body, but especially in the muscle. So the effect of testosterone cannot be neglected in males. In fact, even a male who participates in very little sports activity but who nevertheless has the normal level of testosterone will have muscle mass which grow about 40% larger than those of the comparable females. So testosterone का effect obviously है. Now, the female sex hormone estrogen probably also accounts for some differences between male and female performances. Estrogen increases the deposition of fat in the muscle in the females, especially in the breast area, hip area, subcutaneous tissue, and at least partly for this reason, the average young non-athletic female has about 34% body fat composition in contrast to the non-athletic female. So if you look at the diagram here, this diagram shows comparison of fat present, percentage of fat in the males and females. So you see with the passage of time it slightly increases, and at all age groups it is more in females. So this color is the female. So if you look 8 to 11 years old, fat composition is more in females, and this is true for all age groups up till the age of more than 80, and that's because of estrogen. Now, the average percentages of body fat are higher in older women, older men and women, but in women in all categories it is higher. In the US itself, for example, the prevalence of obesity is now approximately 37%, all thanks to the junk food that they and all of us also consume. Increased body fat composition is a detriment to highest level of athletic performance. So if there is more body fat, the performance goes down. That's as simple as that. Okay. So that's kind of a very nice introduction to the chapter of sports physiology. I'll continue the chapter in the next video. Stay tuned.